हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 थोड़ा थोड़ा पीछे ले लो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे प्रभु हरि राम बोल। हरे राम इसको कैसे रखो, कहाँ रखो? पीछे ले लो। बैठो, थोड़ा खींचकर। प्रभु इसको मैनेज करो, है ना? मैं ओपन लाइव ही है। हाँ, टूटा हुआ है। वायर मंगाना पड़ेगा, वायर देखो अपने लेकर आए तो अपना होगा ना, नहीं है ना, वो तो अपना है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम I need this space here. I need this space for the camera. We have to. There's so much space. Please. मिल रहा Okay, so check it out. ये पहले तो हमें इसमें प्रेस करके डांस और ऐसे बांध दे, हरे डाल दिया ना। कृष्णा 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 हरे 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 राम राम महाराज का मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। परम पूज्य शिला इंद्रदुम्न स्वामी महाराज अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति शिला भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के अत्यंत समर्पित एवं वरिष्ठ शिष्य हैं।
Ada rasa mil bilang pergi ikan itu terus lewat ikan terus ini masuk kelas. કેમ છો? Homagyam Jai Shri Krishna Jai Nanda Guru Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Good evening everyone and welcome. सभी का स्वागत है। This evening in this beautiful city of Surat, which was graced by the lotus feet of Srila Prabhupada, I would like to speak this evening about love. श्रील प्रभुपाद की कृपा से आज सूरत में मैं प्रेम के बारे में कुछ बोलना चाहूँगा। Because actually our whole process is about love. तो प्रेम ये सबसे जरूरी विषय है। Narottam Das Thakur, the great saint, he said, Hari Guru Vaishnava. That we are learning to develop our love for the Vaishnavas, for the spiritual masters, and Shri Krishna. तो नरोत्तम दास ठाकुर जो कि एक महान वैष्णव हैं, उन्होंने ये कहा है हरि गुरु वैष्णव। तो हमें हमारे जीवन में गुरु वैष्णव और कृष्ण के लिए प्रेम उत्पन्न करना है। Sometimes it's said this is a movement of love masquerading as a philosophy. तो कभी कभी ये कहा जाता है कि ये आंदोलन प्रेम का है जिसको सिद्धांत के द्वारा बताया जा रहा है। It's a movement of love masquerading as philosophy. तो ये प्रेम का जो आंदोलन है इसको सिद्धांत के द्वारा बताया जा रहा है। Of course, love is a theme that everyone in this world, without exception, is interested in. तो प्रेम एक ऐसा विषय है जो हर कोई जिसके बारे में बिना अपवाद के बिना अपवाद के जानना चाहता है। Everyone wants to love and everyone wants to be loved. हर कोई प्रेम करना चाहता है और प्रेम पाना चाहता है।
we can just understand how important love is in our modern world, and that most, if not the songs today, as well as movies and novels, are about love. तो हम देख सकते हैं कि प्रेम कितना अनिवार्य है कि जितनी भी फिल्में आती हैं, गाने होते हैं, किताबें होती हैं, वो प्रेम पे आधारित होती हैं। I want to love, I lost my love. मैं प्रेम करना चाहता हूँ, मैं अपना प्रेम खो बैठा हूँ। There's even a saying in English, love makes the world go around. अंग्रेजी में ऐसा कहा जाता है कि प्रेम हमें घुमाता है दुनिया भर में। And I was reading the other day that one's love of the family is the main force behind all economic pursuits. तो मैं ये कहीं पढ़ रहा था कि परिवार के लिए प्रेम सबसे अधिक बल है हमारे आर्थिक आध्यात्मिक आवश्यकताओं के लिए। But be that as it may, we're here tonight in pursuit of a different kind of love. तो आज हम सब मिले हैं और एक दूसरे तरीके के प्रेम को पाने का प्रयास करेंगे। You could say the original love. कह सकते हैं कि वो ओरिजिनल प्रेम, वास्तविक प्रेम, Love of Radha and Krishna. राधा और कृष्ण का प्रेम। Actually, to speak quite frankly, the love of this world is a perverted reflection of that love. तो अगर वास्तविकता में कहा जाए तो यह प्रेम उस प्रेम का प्रतिबिंब है। Love in this world is compared to iron, and love in the spiritual world is compared to gold. भौतिक जगत का प्रेम लोहे के समान है, आध्यात्मिक जगत का प्रेम सोने के समान है। Now, the love that we're speaking about, bhakti, can be summarized in a very interesting way. भक्ति, जिस प्रेम को हम भक्ति के द्वारा समझने का प्रयास कर रहे हैं, इसको बहुत रोमांचक तरीके से समझा जा सकता है। By one of our rasa acharyas. हमारे रसिक आचार्यों के द्वारा। Rasa acharya means the acharya who is teaching us the process of loving Radha and Krishna. रसिक आचार्य वो हैं जो हमें राधा कृष्ण को प्रेम करना सिखाते हैं। Srila Rupa Goswami Prabhupada. श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद। He writes in his illustrious 1-2-23, Yutinam Yatayini, Yunam Cha Yurakal, Manabhiranate Tatam, Manabhiranatam Tvayi. Just as the minds of young women are attracted to a young man, and the minds of a young man are attracted to young girls, Krishna, may my mind be attracted to you. श्रील रूप गोस्वामी ग्रंथ भक्ति रसामृत सिंधु में ये कहते हैं कि जिस तरह एक युवती का मन एक युवक से आकर्षित होता है और एक युवक का मन एक युवती से आकर्षित होता है, उसी तरह मेरा मन आपसे आकर्षित हो जाए। We all know, let's be honest, we all know the power of attraction for the opposite sex. हम सब इस शक्ति को जानते हैं। यही जो प्रेम यहाँ पे सेक्स रूप में होता है। It's a very powerful force. ये बहुत ही प्रबल शक्ति है। Are you married? Yes. Yes, ma'am. You love your wife? Yes. How much you love your wife? It's good. And where is the wife? Abu Jakshi, Mataji, get up. your wife? No, that's embarrassing. Yeah. And how much do you love your husband? It's not. There you go. Thank you. So, that's good. It's Grihastha life. This is proper. तो ये अच्छा है, ये गृहस्थ जीवन है। But ultimately, we have to transfer this loving propensity to Krishna. तो अंततः हमें ये प्रेम करने की प्रवृत्ति कृष्ण की ओर परिवर्तित करनी होगी। But in modern society, it's all backwards.
पर हमारे समाज में सब उल्टा चलता है। First of all, we're taught, love your body. सबसे पहले हमें सिखाया अपने शरीर से प्रेम करो। Then extension, love your father and mother. उसका विस्तार है अपने माता पिता से प्रेम करो। Then love your brother and sister. बाद अपने भाई बहनों से प्रेम करो। Then love your society. से प्रेम करो। Love your country. अपने देश से प्रेम करो। Love humanity. पूरे मानव समाज से प्रेम करो। But such love is not fully satisfying. पर ऐसा प्यार पूर्णतः संतुष्टि नहीं देता है, Because it's temporary. क्योंकि ये अस्थायी है। Therefore, it's not satisfying to the eternal soul. इसीलिए ये शाश्वत आत्मा को संतुष्टि नहीं प्रदान करती है। Of course, such love is human nature. यह प्रेम मानवीय स्वभाव है। I'm not absolutely condemning it. मैं इसे पूर्णतः खारिज नहीं करता हूँ। Srila Prabhupada himself compassionately addresses this type of love for humanity in a purport to Bhagavad Gita. श्रील प्रभुपाद यही प्रेम को अपने तात्पर्य में बहुत ही स्नेहपूर्वक दयापूर्वक बताते हैं। In chapter 1 of Bhagavad Gita, verse 28, भगवद गीता के पहले अध्याय के 28वें श्लोक में we hear Arjuna say, हम यहाँ पे अर्जुन कहते हैं, Nam Krishna, Yuyusvam Samupashita, Siddhanti Mama Attani Mukhancha Parakrishati. My dear Krishna, seeing my friends and relatives present before me in such a fighting spirit, I feel the limbs of my body quivering and my mouth drying up. मेरे प्रिय कृष्ण, अपने मित्रों और संबंधियों को मेरे समक्ष खड़े देखकर, उनको लड़ाई करते हुए देखकर मेरे शरीर के पैर कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूख रहा है। Arjuna is attached. अर्जुन आसक्त है। He's attached to his friends, he's attached to his relatives, and he sees there's going to be a big battle. He's attached to their bodies. अर्जुन आसक्त है अपने मित्रों से, अपने संबंधियों से। वो देख रहा है कि लड़ाई होने वाली है, इसलिए वो आसक्त है सबके शरीरों से। But in the purport, Prabhupada said that's not such a bad thing. तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि इतनी भी बुरी बात नहीं है। Hare Krishna, confirm. Prabhupada writes, any man who has genuine devotion to the Lord has all the good qualities which are found in godly persons and demigods. As such, Arjuna, just after seeing his kinsmen, friends, and relatives in the battlefield, was at once overwhelmed by compassion for them, who had so decided to fight amongst themselves. Such symptoms in Arjuna were not due to weakness, but due to his soft-heartedness, a characteristic of pure devotion. ऐसा व्यक्ति जिसके हृदय में भगवान के लिए सच्चा प्रेम होता है, उसके अंदर दैविक गुण, देवताओं समान दैविक गुण अपने आप आ जाते हैं। अर्जुन अपने समक्ष अपने मित्रों संबंधियों को लड़ने के लिए खड़ा देख रहा था और उसके हृदय में करुणा उत्पन्न हुई और इसलिए वो लड़ाई नहीं करना चाहता था। ऐसे गुण अर्जुन के हृदय में उसके दुर्बलता के कारण नहीं, यद्यपि उसके सॉफ्ट हार्टेडनेस, करुणा के कारण प्रदर्शित होता है। But there's a higher understanding, a higher love to me. पर एक और ऊंचा सिद्धांत है। And Krishna points that out in chapter 2, verse 2 of the Bhagavad Gita. कृष्ण दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में बताते हैं, Seeing Arjuna attached like this, Krishna says, my dear Arjuna, how have these impurities come upon you? They're not befitting a man who knows the higher values of life. कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुम्हारे अंदर ऐसी अशुद्धताएं कैसे आई? तुम जैसे व्यक्ति के लिए ये शोभा नहीं देती है। Prabhupada said that human natures were attached. It's a quality of the devotee, it's not part of it. प्रभुपाद कहते हैं कि भक्तों के अंदर ये गुण है कि उनका हृदय बहुत कोमल होता है।
But there's a deeper understanding of love. पर इससे गहरी गहरी हम समझ सकते हैं कि प्रेम का गहरा, And what is that? और वो क्या है? The soul's love for the Supreme Soul, God. आत्मा परमात्मा से प्रेम करती है। That love was once there, वो प्रेम होता है, but by Jagannath Pandit says in his Pema Vivarta, we turned our face from God to come to this world. जगन्नाथ पंडित कहते हैं कि हम भगवान से विमुख हो गए हैं, इसलिए हम इस जगत में आ गए हैं। If you're talking with someone and you go like, it's very offensive. अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और अपना मुंह मोड़ लें तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। So he uses this word, bahir mukh mukh, yes, bahir. तो ये शब्द इस्तेमाल करते हैं बहिर्मुख। My mother used to say when she was chastising me, son, you look at me when I'm talking to you. मेरी माँ जब मुझे डांटती थी तो मुझे कहती थी, पुत्र मेरी तरफ देखो जब मैं तुम्हें डांट रही हूँ। So we gave up that love and devotion. We gave it up to come to this world with birth and death. तो हमने उस प्रेम को त्याग दिया और इसी कारण से हम इस भौतिक जगत में हैं। And the purpose of life is to re-establish that lost relationship. तो जीवन का लक्ष्य ये है कि इस खोए हुए संबंध को पुनः स्थापित करना है। In English we have the word religion. अंग्रेजी में ये शब्द है रिलीजन, धर्म, रिलीजन। So the Latin verb religio in religion means to re-establish our connection with God. तो उस शब्द का अर्थ ये है कि पुनः अपना संबंध भगवान से स्थापित करना, Just like yoga. योग की तरह, Yoga means to reconnect. जिसका अर्थ है कि पुनः With what? स्थापित करना, किससे? With Krishna. कृष्ण से, भगवान से। Religion and yoga are the same. रिलीजन और योग एक ही है, So that's the purpose of life. और यह जीवन का लक्ष्य है। First of all, we have to understand the inherent faults in a loving relationship in this world. सबसे पहले ये हमें समझना होगा कि वो गलतियां जो हम भगवान से प्रेम स्थापित करते हुए करते हैं, The imperfection is that it's temporary. इसकी पूर्णता यह है कि यह अस्थायी है। Sorry. It's temporary. It's frustrating. तो ये अस्थायी है। Either you're separated by divorce, अगर आपका तलाक हो गया है or we're separated by death. और या हम मृत्यु के कारण अलग हो गए हैं, And as much as you're attached to something, when you're separated from it, you feel the same pain. जितना हम किसी से आसक्त होते हैं, जितना ज्यादा हम किसी से आसक्त होते हैं, उतनी ज्यादा तकलीफ होती है जब हम उससे अलग होते हैं। If I lose my watch, अगर मैं अपनी घड़ी खो दूं, if it's a very simple 200 rupee watch, okay. But if it's like a Rolex, तो अगर वो एक साधारण सी 200 रुपए की घड़ी हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो रोलेक्स हो तो so these are the hard realities of life. तो ये जीवन की कठोर सच्चाई है। We've all, probably everyone's lost a loved one. हम सभी ने किसी न किसी को अपने जीवन में खोया होगा। Grandma, grandpa, हमारे दादा दादी, child. बच्चा, It's painful. ये बहुत ही दर्दनाक है। Yes, this is love in the relationship with Krishna. The love ad infinitum. The love with Krishna is growing, 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 growing forever and ever and ever in the spiritual world. We can hardly imagine. कृष्ण के लिए प्रेम आध्यात्मिक जगत में हमेशा बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। हम इसके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। We have to be real about this world. We're strangers in a strange land,
We don't belong here. हमें इस बात को समझना होगा कि हम अजनबी हैं, हम यहाँ के हैं ही नहीं। We are spiritual. Essentially, we are spiritual, Atma, souls. We belong in the spiritual world. हम वास्तविकता में आत्मा हैं, आध्यात्मिक हैं, हम इस जगत के नहीं हैं। We're like fish out of water. जैसे कि एक मछली पानी के बाहर। You must have some beautiful lakes or rivers here in Gujarat. गुजरात में बहुत सुंदर तालाब नदियां होंगी। You go take a fish. Don't go fishing, but you you take a fish and bring it to Surat. आप फिशिंग मत जाना, लेकिन एक मछली को सूरत ले आना। Fishy, you're in the murky water. I'm going to take you to Surat. You're going to have a good time. मछली तुम मैले पानी में हो, आओ तुम्हें सूरत ले चलता हूँ, बड़ा आनंद आएगा। Fishy, our Prime Minister Modi is from Surat. मछली हमारे प्रधानमंत्री सूरत से हैं, मोदी जी। Things are improving there. Things improving there. Improving. चीजें अच्छी हो रही हैं। Fishy, here's a car for you. वो मछली तुम्हारे लिए एक गाड़ी है, Mercedes. मर्सिडीज। Here's the keys. Fishy, enjoy. ये लो चाबी, मजे करो। You take the fishy to some bar and you offer him some beer. मछली को बार में ले जाओ, बियर पिलाओ। Come on, fishy. चलो फिशी। It's getting better. You introduce the fishy to a beautiful girl. मछली को एक सुंदर लड़की से मिलवाओ। His eyes go wong. उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, His face is flattening. और वो हिलने लगती है, And the girl gets scared and she runs away. और लड़के भाग जाते हैं। लड़की भाग जाती है। So a fish cannot be happy outside his element. एक मछली पानी के बाहर खुश नहीं रह सकती है। Take the fish, put him back in the water. मछली को लो, दोबारा पानी में डाल दो और वो चलने लगे। We're laughing at ourselves. We're laughing at ourselves. हम सब खुद पे हंस रहे हैं, Because we're also like fish out of the water. We're trying to enjoy those things. They don't bring any lasting satisfaction. हम भी उस मछली की तरह हैं जो पानी के बाहर है। हम उन चीजों में आनंद ढूंढ रहे हैं जिसमें कोई आनंद ही नहीं है। We'll only be happy when we get back to the spiritual world. हम तभी खुश हो सकते हैं जब हम आध्यात्मिक जगत वापस जाएंगे। And what's the highest happiness? और सर्वोत्तम आनंद क्या है? Love. प्रेम। Even in this world, love is the highest happiness. इस जगत में भी प्रेम सर्वोत्तम खुशी प्रदान करती है। If you have everything, money, gold, fame, nice house, but you don't have someone to share it with, you can't be happy. अगर आपके पास सब कुछ हो, पैसा हो, नाम हो, घर हो, लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा नहीं हो जिसके साथ आप उसका आदान प्रदान कर सकें, तो आप खुश नहीं रहेंगे। Loneliness is the most miserable. अकेलापन सबसे दुर्दाई होता है। But if you have nothing but the shirt on your back, but you have a beautiful wife, nice husband, children, family members, if you have someone to love, even if you're poor, you can be happy. अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आप गरीब हो, लेकिन आपके पास एक अच्छी पत्नी हो, बच्चे हो, जिनके साथ आप जो आपको प्यार करते हो, तो आप खुश रह सकते हैं। I've been traveling as a sannyasi in this world for 44 years. सन्यासी के रूप में मैं इस जगत का भ्रमण 44 साल से कर रहा हूँ। I've met queen, prime ministers, presidents. मैं राजा, रानियों, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट से मिला हूँ। Famous athletes. प्रसिद्ध एथलीट से मिला हूँ। Bollywood stars. बॉलीवुड के स्टार्स से मिला हूँ। Big businessmen. बड़े बड़े उद्योगपतियों से मिला हूँ। And very often they tell me, Swamiji, help me, I have everything, but I'm not happy. कई बार वो कहते हैं, स्वामी जी मेरे पास सब कुछ है
लेकिन खुशी नहीं है। Because sometimes when you're on top, it's very lonely. कभी कभी जब आप सबसे ऊपर होते हैं तो अकेले होते हैं। You have many associates but no lovers. आपके पास कई परिकर हैं पर वो नहीं जिनसे आप प्रेम कर सकें। Whereas I've been in the slums of Mumbai, in the favelas of Rio de Janeiro, in the townships of South Africa. I meet poor people, but they have a loving wife, they have a loving husband, children. They're happy because love is the highest. मैं मुंबई की झोपड़ियों में गया हूँ, रियो डी जेनेरियो की जगह गया हूँ, वहाँ पे गरीबों से मिला हूँ जिनके पास कुछ नहीं है लेकिन एक अच्छी पत्नी है, बच्चे हैं और वे खुश हैं। So logically in the spiritual world, love is also the highest happiness, but love is eternal. तो लॉजिकली आध्यात्मिक जगत में प्रेम सर्वोत्तम खुशी प्रदान करती है और प्रेम शाश्वत है। That's actually what we're looking for. जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं। So therefore we should be gradually detached from this world. तो धीरे धीरे हमें इस जगत से अनासक्त होना है। It takes time to become detached. समय लगता है अनासक्त होने में। It can't be artificial. हम कृत्रिम रूप से नहीं कर सकते। Just hearing a lecture like this, run to Rishikesh, just wear a kapsha, sit in the forest, तो ऐसे प्रवचन सुन के हम जंगल में जाके गमछा पहन ले और योगी। Gradually we become. धीरे धीरे ऐसा होगा। We can practice renunciation through Ashram. हम गृहस्थ जीवन में भी इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। Husband and wife take according to their need, not according to their greed. We can live a simple life and be happy practicing Krishna. पति पत्नी मिलके आवश्यकता पूर्वक चीजों को करें, लोभ ना करें और ऐसा करते हुए अनासक्त हो सकते हैं। We have many examples of persons who have realized these things in their life. हमारे पास ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जिन्होंने इस बात का आत्म साक्षात्कार किया है। Recently, someone sent me a message on WhatsApp. अभी कुछ ही दिन पहले किसी ने मुझे मैसेज भेजा व्हाट्सएप पर। There's a new movie about Alexander the Great. एक नई पिक्चर आई है अलेक्जेंडर द ग्रेट। You've heard about Alexander the Great? क्या आपने सुना है? So they said you should watch this movie. तो उन्होंने कहा कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए। But I said, I've already learned from Alexander the Great what needs to be learned from him. पर मैंने उनसे कहा कि मैं पहले ही सीख चुका हूँ जो अलेक्जेंडर द ग्रेट से सीखना चाहिए था। Because on his deathbed, he summoned his generals and he shared with them his 3 ultimate wishes. तो अपने मृत्यु की शैया पर ने सेनापतियों को बुलाया और 3 इच्छाओं को प्रदर्शित किया। He's going to die. वो मरने ही वाला है। So he calls his top generals. Come, I have 3 wishes, 3 instructions to you. तो अपने मुख्य सैनिकों को बुलाया और कहा कि मेरी 3 इच्छाएं, मेरी 3 निर्देश हैं तुम्हारे लिए। So after I die, the best doctors in the land should carry my coffin to the burial. तो जब मैं मर जाऊं तो सबसे उच्च चिकित्सकों को मेरे ताबूत को उठाने के लिए बुलाना। And all the wealth that I've accumulated in this life, the money, the gold, the precious stones, the jewels, it should be scattered all around the ground as they carry my coffin to the grave. तो जब मेरे ताबूत को वो ले जा रहा हूँ तो जितना भी पैसा, सोना और हीरे जवाहरात मैंने कमाए हैं उसे मेरे ताबूत के आसपास बिखेर देना रास्ते पे। What? As they're carrying his coffin, all the money, just throw it on the ground as the coffin's going. Money, money, gold, gold, throw it all. तो जैसे उसके ताबूत को ले जा रहे हो तो जितना भी पैसा उसने इकट्ठा किया है उसको रास्ते में
ऐसे वैसे करके फेंकते रहे। And as you carry me in the coffin, make sure my hands are outside the coffin, hanging like this. तो मेरे ताबूत को जब ले जा रहा हूँ तो ये ध्यान रखना कि मेरे दोनों हाथ ताबूत से बाहर हों और लटकते रहें। So one of his generals said, Alexander, this is really unusual. तो उनकी Could you explain? तो उनके एक सेनापति ने कहा कि ये बड़ा विचित्र है, क्या आप समझा सकते हैं ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं? Why are you saying such things? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? Can you explain? क्या आप इसको समझा सकते हैं? So Alexander said, yes. तो अलेक्जेंडर ने कहा हाँ। He said, I want the best doctors to carry my coffin to demonstrate that in the face of death, even the best doctors in the world have no power to stop death. मैं चाहता हूँ कि सबसे उच्च चिकित्सक मेरे ताबूत को लेके जाएं, तो इससे ये प्रदर्शित होगा कि मृत्यु के समय सबसे उच्च चिकित्सक भी किसी को बचा नहीं सकते। I want the road to be covered with my treasures so that everyone can see that material wealth acquired on this earth stays on this earth. तो वह सड़क जहाँ से मेरे ताबूत को ले जाया जाएगा उसको मेरे पैसे से बिखेर दिया जाए, ये दिखाने के लिए कि जो भी पैसा यहाँ कमाया जाता है वो यही धरती पर रह जाता है। And I want my hands to hang outside the coffin so that people understand that we come to this world empty-handed and we leave this world empty-handed. मैं चाहता हूँ कि मेरे हाथ ताबूत से बाहर खाली हाथ लटकते रहें ताकि लोग ये देखें कि हम खाली हाथ इस दुनिया में आए थे और खाली हाथ ये दुनिया छोड़ के जाएंगे। It's interesting. बहुत ही रोमांचक है, But does it go to the heart? और ये हृदय को स्पर्श करता है। Do we really understand those truths and act accordingly? क्या हम वास्तव में इन सच्चाइयों को समझते हैं और ऐसा व्यवहार करते हैं? Or is such wisdom in one ear and out the और other? क्या ऐसा ज्ञान बस इस कान से आया, कान से निकल गया? So as everything is temporary, like he was explaining, love will come, love will go. तो सब कुछ अस्थायी है, प्रेम भी आएगा और प्रेम भी जाएगा। We come together as friends and family and country members, and we come together as friends and family members. I think we're separate. Birth after birth. जन्म जन्मांतर हम सब मित्र, परिवार और समाज के लोग साथ में आते हैं और फिर अलग हो जाते हैं, और फिर आते हैं और फिर अलग हो जाते हैं। Bhagavad Gita, 10th canto, 5th chapter, verse 25. भागवतम के 10वें स्कंद के 5वें अध्याय के 25वें श्लोक में Nakatra priya samvasha, Suridam chittapamanam, gain of view namanam, avanam shravasavita. Many planks and sticks, unable to stay together, are carried away by the force of the river's waves. Similarly, although we're intimately related with friends and family members, we're unable to stay together because of our various past deeds and the waves of time. बहुत सारी लकड़ियां साथ में नहीं रह पाती क्योंकि वो पानी के बहाव से बहती रहती हैं। इसी तरह यद्यपि हम सब आपस में संबंधित हैं, हमारे दोस्त और परिवार, हम सब भी कभी साथ में नहीं रह पाते। यह हमारे कर्मों पर निर्भर करते हैं और समय पर निर्भर करते हैं। So, that's the first half of the lecture. It's pretty heavy. तो ये आज के लेक्चर के पहला भाग था, बहुत ही भारी था। Don't despair. There's a positive alternative. तो क्या कोई सकारात्मक दृष्टिकोण है, विकल्प है? There's always a happy ending in Krishna consciousness. कृष्ण भावनामृत में अंत हमेशा आनंदप्रद होता है। Chaitanya Mahaprabhu has said, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, the Supreme Lord to be worshipped is the son of the king of Braj. His personal abode is Vrindavan. The most favorable mood of serving him is that which was practiced by the young maidens of Braj. The scripture Bhagavatam is the spotless source of reliable knowledge and pure love of God is the supreme goal of life.
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा ब्रज के राजा के रूप में होती है। उनका इस प्रकार ब्रजगोपियों ने की वो सर्वश्रेष्ठ है और उनका जो प्रेम है वही जीवन का लक्ष्य। और श्रीमद् भागवत जो अमर पुराण है, जो शुद्ध ज्ञान प्रदान करता है, और हमारे जीवन का जो परम लक्ष्य है वो भगवत प्रेम ही किया गया है। हाँ तो कोई कह सकता है ठीक है, लेकिन कृष्ण को प्रेम कैसे करें? I'm convinced. Swamiji gave the lecture. I want to be renounced. I want to get attached to Krishna. What do I do? मैं समझ गया हूँ, स्वामी जी ने अच्छा लेक्चर दिया कि मैं कृष्ण को प्रेम करना चाहता हूँ, मैं आसक्ति लाना चाहता हूँ, पर मैं क्या करूँ? Mahaprabhu says, Ramya Kachit Vipassana Braja Bhatu Bhakti. If you want to know the process of worshiping Krishna, of loving Krishna, just try to follow in the footsteps of the gopis, the cowherd girls of Vrindavan. Their love is the highest perfection. अगर आप कृष्ण को प्रेम करना चाहते हैं तो केवल ब्रज गोपियों के पद चिन्हों पर चलिए। ये पूर्ण तरीका है प्रेम, कृष्ण से प्रेम करने का सर्वश्रेष्ठ। It's very easy to fall in love with Krishna. बहुत ही आसान है कृष्ण को प्रेम करना। The whole process is to fall out of love with the material world into love with Krishna. हमारा पूरा प्रोसेस है कि भौतिक जगत से प्रेम नहीं करना है और कृष्ण को प्रेम करना है। We can fall in love with Krishna because he's so adorable, he's so attractive. हम ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं क्योंकि कृष्ण इतने सुंदर हैं, इतने आकर्षक हैं, प्रशंसनीय हैं। You're blessed in this country. आप लोग पे बहुत कृपा हुई है इस देश। In the West, if you ask someone, tell me something about God. अगर पाश्चात्य देश में अगर आप किसी से पूछें, चलो भगवान के बारे में कुछ बताओ। God. Lord, English, Lord. They'll say, God, he lives up there. गॉड वो वहाँ ऊपर रहते हैं। Can you tell me something else about God? क्या आप मुझे कुछ और बता सकते हैं गॉड के बारे में? He's got gray hair. उनके बाल खड़े हो जाते हैं Because he's the oldest person. क्योंकि वे सबसे प्राचीन हैं। He's the original person, so he's an old man. क्योंकि वे सबसे प्राचीन हैं तो वे बूढ़े होंगे। Can you tell me something more about God? क्या आप मुझे गॉड के बारे में और कुछ बता सकते हैं? No. नहीं। With all due respect, I'm not criticizing another religion. बहुत ही आदरपूर्वक मैं किसी और धर्म को निंदा नहीं कर रहा हूँ। My point is, how can you love someone you know nothing about? महाराज, क्या आप कैसे किसी को प्रेम कर सकते हैं अगर आप उसके बारे में कुछ जानते ही ना हो? Why did you choose your husband or your wife? Because the way they look, the way they walk, the way they talk, the clothes they wear, the music they like. Love is in the details. तो आपने अपने पति या पत्नी को क्यों चुना? क्योंकि वो कैसे चलते हैं, कैसे दिखते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं। तो प्रेम उनके बारे में विस्तार रूप में जानने से होता है। They're translating the translator. He's trying his best. So we have so much information about Krishna. तो हमारे पास कृष्ण के बारे में इतनी सारी जानकारियां हैं। The original form of God. भगवान का मूल स्वरूप। Many incarnations. भगवान के बहुत अवतार हैं। But Krishna's avatari is the source of all. और कृष्ण अवतारी हैं, वे सारे अवतार के स्रोत हैं। And it was mentioned the love of the gopis. यहाँ पे कहा गया है गोपियों का प्रेम। Why did the gopis love Krishna? गोपियां कृष्ण से प्रेम क्यों करती थी? Because he's a cowherd boy. क्योंकि वो एक ग्वाला थे। Along with his friends and cows, he goes to the pasturing grounds of Vrindavan. क्योंकि वे अपने ग्वाल बालों और गायों के साथ वृंदावन में गाय चराने जाते थे। Krishna used to go to the pasturing grounds every day, and the gopis
by social custom, they stayed home. कृष्ण अपने गायों के साथ गाय चराने जाते थे और गोपियां सामाजिक रीति के कारण घर पर रहती थी। But when Krishna is in the forest all day long, we're thinking, Krishna's feet are so soft. Now he's walking on the rough ground. तो जब भी कृष्ण जाते हैं तो गोपियां सोचती कृष्ण के चरण कितने कोमल हैं, वो इतने खुरदुरे जमीन पे चल रहे होंगे। The stones are pricking his feet. He must be feeling some pain. पत्थर उनको उनके पैरों को चुभ रहे होंगे, कंकड़ चुभ रहे होंगे, दर्द हो रहा होगा। Thinking this way, the gopis start to cry. ये सोचते सोचते गोपियां रोने लगती। You see, their relationship with Krishna was so intimate and so deep that Krishna himself had to admit one day, "My dear gopis, it's not in my power to repay your love." गोपियों का प्रेम इतना आत्मिक था कि कृष्ण को एक दिन बोलना पड़ा कि गोपियां, मैं तुम्हारे प्रेम का प्रतिदान नहीं कर सकता हूँ। My dear gopis, it's not possible for me to repay my debts which you have created by your deep love. मेरी प्रिय गोपियां, जो प्रेम तुमने मुझे दिया है उसका मूल्य मैं कभी नहीं चुका सकता हूँ। So we're meant to follow in the footsteps of the gopis. तो हमें गोपियों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। And amongst the gopis, who's the topmost gopi? और गोपियों में सर्वश्रेष्ठ गोपी कौन है? Vrindavaneshwari. वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधा रानी। So we have to come to that stage. Prema Pumako Aham. We have to become perfect in one very short lifetime. तो हमें उस स्तर पर पहुंचना है, हमें एक जीवन में ही पूर्ण सिद्धि को प्राप्त करना है। प्रेम पुमातो महान। And how do you fall in love with Krishna? You hear about him constantly. तो आप कृष्ण को कैसे प्रेम कर सकते हैं? उनके बारे में निरंतर सुनते रहें। Just like many of you, it was an arranged marriage. जैसे कि आप में से बहुत से लोगों की अरेंज मैरिज हुई है। It wasn't love marriage, arranged marriage. वो लव मैरिज नहीं, अरेंज मैरिज है। And how did you become attracted to someone you never met? तो Your कैसे? mother said, "He's a nice boy. He's so tall. He has dark eyes. He's handsome. Lots of money. And he's Krishna conscious. Oh, I can't wait to marry him." तो कैसे आप उस व्यक्ति से आकर्षित हुए? आपकी माँ ने कहा वो सुंदर दिखता है, वो लंबा है, उसकी गहरी आंखें हैं, उसके पास बहुत पैसा भी है। You're speaking about yourself. Yes, mother. A handsome boy, educated. He looks like Korpati. And also Krishna conscious. So Shravanam Kirtanam brings Krishna Smaranam! और कीर्तन से आता है कृष्ण स्मरणम। Or if we hear about Ram, Sitaram, Lakshman, Hanuman, Ramayana, या अगर आप राम, सीताराम, लक्ष्मण, हनुमान, रामायण के बारे में सुने, then in our heart, तब हमारे हृदय में Jai Shri Ram! 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 There's lots of love for Ram, I can see. You're Gujaratis, you're supposed to love Krishna. आपके हृदय में बहुत राम के लिए प्रेम दिख रहा है। आप लोग गुजराती हैं, आपके हृदय में कृष्ण के लिए प्रेम होना चाहिए। I'll tell you one short story about pastime about Krishna. I think it will help you love him even more. तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ कृष्ण के बारे में, जिसके लीला सुनाता हूँ, जिसके सुनने से आपके हृदय में कृष्ण के लिए प्रेम और उत्पन्न होगा। So one day, after hearing Krishna had stolen butter, makhan, from the local ladies, Yasoda approached Krishna and said, "Krishna, you stole butter, yes?" तो एक बार जब ऐसा यशोदा मैया सुनती हैं कि कृष्ण ने माखन चुराया है पास के घर से, तो एक मैया जाती है और कृष्ण से कहते हैं, कृष्णा तुमने माखन चुराया है? Yeah, it wasn't me. मैं नहीं था। How could it be me? You sent me to Madhuvan today to herd the cows. मैं कैसे हो सकता हूँ? आपने मुझे मधुबन भेजा था गैया चराने। I left very early this morning. I've just now
returned as the sun is setting. मैं सुबह सुबह निकल गया तो और अभी शाम को जब शाम को आया हूँ, The cows and my friends are my witness. मेरी गाय और मेरे दोस्त मेरे साक्षी गवाह हैं। How can you accuse me like this, Naya? मैया आप मुझ पे ऐसा आरोप कैसे लगा सकती हो? And Krishna started crying. कृष्ण रोने लगते हैं। I returned today very tired and hungry. Now you're calling me chore. Now you're calling me thief. मैया मैं घर भूखा थका हारा आया हूँ और अभी आप मुझे चोर बुला रही हो? Maya, how can you be so cruel? मैया तुम इतनी क्रूर कैसे हो सकती हो? Am I no longer your son? क्या मैं अब तुम्हारा पुत्र नहीं हूँ? If not, I will not live here any longer. I'll run away to Nandagata. और अगर नहीं हूँ तो मैं और नहीं जीना चाहता, मैं नंदग्राम से चला जाता हूँ। So Mother Yashoda's heart softened. मैया का हृदय कोमल हो गया। She said, Lala, perhaps I'm mistaken. Maybe the neighbor saw someone else. शायद ऐसा हो सकता है कि मैंने गलती कर दी हो, बगल वालों ने किसी और को देखा होगा। So she put her face in her palms and she started crying. Oh, my son, I was wrong. I'm so sorry. मैया रोने लगी, कहने लगी कि मैं गलत थी, मुझे माफ कर। It was the neighbors who complained. ये पड़ोसियों की गलती है। They swore upon their cows that you spent all day terrorizing their homes, breaking their yogurt pots, and eating the contents, and giving it to the monkeys. उन्होंने अपनी गायों की सौगंध लेके कहा है कि आप दिन भर उन्हें परेशान कर रहे थे, मटकी को तोड़ रहे थे और माखन बंदरों को खिला रहे थे। But maybe they were wrong. Maybe it was some other boy. परंतु हो सकता है कि वे गलत हों, वो कोई और लड़का हो। So seeing his mother crying, Krishna's heart softened. अपनी माँ को रोते हुए देख के कृष्ण का हृदय कोमल हो गया। And placing one hand on her arm, he pleaded, Maya, don't cry. I confess, I stole the butter. तो अपना हाथ मैया के हाथों पे रखकर कृष्ण कहते हैं कि मैं मानता हूँ, मैं मान लेता हूँ, मैंने ही माखन चुराया। So Yashoda started crying even louder. No, Lala, forgive me, oh innocent one. I wrongly accused you. तो मैया रोने लगी कि लाला मुझे माफ कर दो, मैं तुम पे गलत आरोप लगा रही थी। It's as you say, you were in Madhuvan, you couldn't have done it. तो जैसे तुमने कहा कि तुम मधुवन में थे, तुम ऐसा कर ही नहीं सकते हो। So then Krishna squeezing his mother's arm, Maya, you are not to blame. I did do it. I did steal the makhan. तो कृष्ण अपनी माँ के हाथों को दबाते हुए कहते हैं, मैया मैंने ही ये किया है, मैंने ही माखन चुराया है। So Yashoda said, no, you didn't. तो यशोदा कहती कि नहीं तुमने नहीं किया। Krishna said, yes, I did. कृष्ण कहते हैं हाँ मैंने ही किया है। And now, barely able to control her laughter, she said, no, you didn't. She's playing a little trick on Krishna. तो यशोदा अपने हंसी को नहीं रोक पाई और बिल्कुल नहीं रोक पा रही थी और कही नहीं तुमने नहीं किया है। She's playing a little trick on him. तो वो कृष्ण के साथ No, you didn't, Krishna. खेल कर रही है। Yes, I did, Krishna shouted. कृष्ण जोर से चिल्लाते हैं, हाँ मैंने ही किया है। But now detecting something funny in his mother's voice, तो कुछ हास्यप्रद अपनी माँ के आवाज में महसूस करते हुए Krishna came very close to her face, कृष्ण उनके मुख के पास आ गए, realized that she was tricking him. ये समझ गए कि माँ बेवकूफ बना रही है। So the mother Yashoda looked at Krishna with wide open eyes and said once more with a smile, no, you didn't. तो यशोदा अपनी आंखें बड़े करते हुए कृष्ण से कहते हैं कि नहीं तुमने नहीं किया। And then laughing, she threw her arms around her son, covering his now smiling, tear-stained face with kisses. तो कृष्ण को बहुत ही प्रेम से आलिंगन करते हुए कृष्ण के चेहरे पे आंसू बहाते हुए चेहरे पे चूमती है। So at that point, Krishna affectionately he stroked his mother's hair, and still determined not to be outdone by his mother, even after being exposed as a thief, he kissed Mother Yashoda's cheek. He whispered in her ear, "Yes, I did, Mom." तो कृष्ण नहीं चाहते थे हारना, तो वो अपनी माँ
के चेहरे पे चुम्बन देते हुए उनके कानों के पास जाके धीरे से कहते हैं कि हाँ माँ मैंने ही किया है। Krishna Kanala ki jai, Chor ki jai, Soda ki jai, Ola Premanande, Shah, Jai Shri Ram. Before concluding, I'd like to introduce you to this new book. पढ़ने से पहले मेरी नई किताब के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। This is not about Ayodhya. This is about Vrindavan. ये अयोध्या के बारे में नहीं, वृंदावन के बारे में। Because we're Gujaratis. क्योंकि हम गुजराती हैं। I'm your adopted son. मैं तुम्हारा गोद लिया हुआ लड़का हूँ। And I've given many lectures on Vrindavan. मैंने कई प्रवचन वृंदावन के बारे में दिए हैं। You could say I live in Vrindavan. आप ऐसा कह सकते हैं कि मैं वृंदावन में रहता हूँ। And during the pandemic, I couldn't go outside, so I studied as many books as I could about Raj. तो संक्रमण के समय मैं बाहर नहीं जा सकता था, तो मैं वृंदावन में रहते हुए कई किताबों को पढ़ा। And when I could go outside, I visited all these holy places. और जब मैं बाहर गया तो ये सारे तीर्थ स्थानों को का दर्शन किया। And studied the pastimes that took place. और मैंने वहाँ के लीलाओं के बारे में अध्ययन किया। And wrote about the personalities who were engaged in these pastimes. और उन व्यक्तियों के बारे में अध्ययन किया जो इन लीलाओं में सम्मिलित थे। I've given about 500 lectures just on Vrindavan. तो मैंने करीब 500 प्रवचन वृंदावन के बारे में दिए हैं। And it's just, we say in English, the tip of the iceberg. और यह केवल एक आइसबर्ग के टिप के समान। The iceberg in the ocean is a little tip out of the water. तो एक आइसबर्ग होता है, उसका एक टिप होता है जो पानी के बाहर दिखता है छोटा सा। So I think I have 1,000 more lectures to give. तो मेरे पास करीब 1000 और प्रवचन हैं जो मैं दे Sri Vrindavan Dham ki! So this book is the first in a series of about 30 more books coming out about Vrindavan. ये उस श्रृंखला के पहली किताब है जिसमें 25 से 30 किताबें और आने वाली हैं। This book is called The Sacred Forest of Vrindavan. And it's the forest on the western bank of the Yamuna. और ये पश्चिमी तट के यमुना के पश्चिमी तट के The next book next year will be the eastern bank of the Yamuna. और अगले साल पूर्वी तट पे किताब आएगी। This transcripts of my lectures. तो ये मेरे प्रवचनों के ट्रांसक्रिप्ट्स हैं। Very beautifully done. बहुत ही सुंदर, Many beautiful photos. बहुत ही सुंदर चित्र हैं। It's the ultimate Parikrama guidebook. तो ये सर्वश्रेष्ठ परिक्रमा गाइड बुक है। When you go to Vrindavan, it's said that a saintly person sees with his ears, not through his eyes. ऐसा कहा जाता है कि जब आप वृंदावन जाते हैं तो साधु पुरुष अपने कानों से दिखते हैं, आंखों से नहीं। So better to hear about Vrindavan than just look at it. बेहतर होगा अगर हम वृंदावन के बारे में सुने। So this book, you can read this book. When you go to Vrindavan, you just take it with you. Oh, where are you? Kamudabad? Oh, Kamudabad. Oh, Tala. Beautiful paintings. तो ये किताब को आप वृंदावन ले जा सकते हैं, आप किसी भी स्थली पे जाएं तो खोल के इस बुक में से पढ़ सकते हैं। I thought because Vrindavan is such a special place, the book should be printed in a very high class way. So this is very high class printing. क्योंकि वृंदावन इतना विशिष्ट जगह है, इसलिए ये बुक भी बहुत ही हाई क्लास प्रिंटिंग की गई है। Therefore, a little expensive. इसलिए कुछ थोड़ा सा महंगा है। 2,500 rupees. 2,500 केवल। But it's worth the investment. पर ये Because, if you can't go to Vrindavan, you can just read about Vrindavan in your home
and I guarantee you'll be in Vrindavan. अगर आप वृंदावन नहीं जा पाते हैं और अपने घर पे ही ये किताब पढ़ते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप वृंदावन में ही होंगे। See how beautiful the paper is, the photos. तो आप देख सकते हैं कि सुंदर, कितने सुंदर Here's a पेपर है, picture of फोटो। me hugging a Kalpavriksha tree. Hugging Kalpavriksha tree. हाँ, ये एक कल्प वृक्ष पेड़ को आलिंगन करने के समान है। Best day of my life. ये मेरे जीवन का सबसे सुंदर दिन है। So we have copies here. तो हमारे पास यहाँ पे किताब है। And after this little talk, I'm going to sit somewhere. मैं यहाँ पे प्रवचन के बाद यहीं पे बैठूंगा And anyone who'd like to take a book, और कोई भी अगर ये बुक लेना चाहता है I'd be very happy to sign the book तो मैं अपना हस्ताक्षर करके with a little dedication and a date. एक लाइन लिखूंगा डेडिकेशन और आज की डेट लिख के। I think it's always nice to have a book signed by the author. मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा होता है अगर हम ऑथर का साइन लें। So we have about 200 books. हमारे पास लगभग 200 किताबें हैं। Everywhere else they make, we were in Chennai, Pune, Chapati, Mumbai. Books went very fast. तो हम कई शहरों में गए थे तो वहाँ पे किताबें बहुत जल्दी से बिकी थी And my hand was just recovering from signing so many books. और मेरे हाथ चलते ही जा रहे थे, थक गए थे इतनी सारी बुक्स को साइन करते। But I'll sit over there. If you'd like a book, please come to me. I'll sign it. We have a little sticker here. So you write your name and easy to read so that I can write your name as a dedication. तो यहाँ पे एक स्टिकर लगाया हुआ है, आप अपना नाम लिख सकते हैं, मेरे लिए आसान होगा आपके नाम से इस बुक को लिखना और साइन करना। I'll finish here. यहीं पे समापन करते हैं। I'd like to thank you again for this opportunity. मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि To have a fired up kirtan with all of you, that was ecstatic. बहुत ही बेहतरीन हमने कीर्तन किया था। And thank you for listening to my humble talk. धन्यवाद कहना चाहता हूँ मैं सबको। I'll give you Bhagavatam class tomorrow somewhere. श्रीमद् भागवतम क्लास कल बाराचा में महाराज की श्रीमद् भागवतम I think क्लास there's 4 or 5 more lectures somewhere. महाराज के 4-5 और लेक्चर्स हैं पूरे। So let's give a big round of applause for my translator who tried his best. Srila Prabhupada ki jai! Thank you. Maharaj, I want to say one word only. I want to just tell in English first. Maharaj loves Girdhar Maharaj so much. You all may not be aware about this, but Maharaj has compiled the Pranam Mantra for Girdhar Maharaj. Girdhar Maharaj Pranam Mantra Hindu Maharaj ने ही लिखा है। सुभक्ति शास्त्र विज्ञाय जल साधन साधने सुभक्ति शास्त्र विज्ञाय जल साधन साधने व्यासा राधे राधे राज्य भक्तों के चाहते हैं। महाराज I'm telling Maharaj, I'm telling them you compose the Pranam for Girdhar Maharaj so much love. Wonderful work that you have compiled. Really, we are very thankful to you. Thank you very much. Hare Krishna. We have the books available here at this table for purchase. We request please to kindly make a line. We have books for everyone. You can form a line and purchase the books. You can either pay by GPay or cash. And we are going to form a line over there for signing. So when you buy the book, you can go there and get the book signed. Yeah.